Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start our next topic of English grammar, that is called punctuation. Otherwise, you can say punctuation marks and use of the capital letters. So let us start our discussion regarding our today's topic, punctuation. Now one question will come in your mind. What is the meaning of punctuation? What do you know about punctuation? What is punctuation? Compare the following two sentences carefully. After that, you will realize what is the meaning of punctuation. The teacher said the student is not paying attention. बच्चों ने कहा कि टीचर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है. और the teacher said the student is not paying attention. The correct one is B. But the wrong use of inverted commas spoil the meaning of the sentence. In second sentence, Rakesh said, "Father, you have forgotten to do your homework." But in real sense, Rakesh said, Father ने कहा राकेश को, "You have forgotten to do your homework." Okay. So, what do you mean by punctuation? The right use of putting in marks or stops in writing skill is called punctuation. We observe that the words used in both the sentences are the same, but their meanings are quite different. Words same थे but meaning different थे. The first sentence in both the groups seems absurd. बड़ा बेतुका लगा the first sentence दोनों ही ग्रुपों में. This is because of the punctuation marks used in the sentence. So we see that हम देखते हैं the wrong use of punctuation marks. अगर हम गलत यूज करते हैं punctuation marks का और their omission may change the entire meaning. तो इससे क्या पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है. इस प्रकार से पंचुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग. तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन मार्क्स और स्टॉप्स इन राइटिंग स्किल इज कॉल्ड पंचुएशन. These are the main punctuation marks. Full stop in latest trend इसको पीरियड बोला जाता है. Ellipsis marks, comma, colon, semicolon, question mark, exclamation mark, quotation marks, and parentheses, apostrophe, hyphen, dash, etc. All these are punctuation marks. You can look at the punctuation tree. Here you will find each and everything regarding your punctuation marks. So let's start our discussion regarding first mark, that is capital letters. Where you will use capital letters, because you know very well there are two forms of alphabets like capital letters and small letters, but there are particular situation where we use capital letters. You can say like a beautiful word God. Where you will see this word, you find this word always in capital form. फर्स्ट कैपिटल लेटर्स आर यूज टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस. जब भी हम किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड लिखते हैं हमेशा कैपिटल में होता है. लाइक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. सो हेयर टी ऑफ दिस इज कैपिटल. सेकंड, लीड द वे प्लीज. एल इन लीड इज कैपिटल. सेकंड, यूज विद द नेम, सरनेम्स एंड टाइटल ऑफ पर्सनस. जब भी कोई नेम सरनेम लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं तो क्या हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, जैसे कैप्टन वर्मा, मिस्टर गुप्ता, टी एन शिशान, एट्सेट्रा. Third, with the name of river, countries, cities, mountains, roads, seas, building, planets, and institution, we always use capital letters. Like Gangas and India, Mumbai, Mount Everest, Grand Trunk Road, the Indian Ocean, the Red Fort, Venice. यहाँ पे क्या है? The Ganga, Indian Ocean, the Red Fort, venues, the name of days of week and months. Example like Sunday, Monday, Tuesday, Saturday, January, December, etc. The name of books, newspapers, magazines, films. We always use first letter capital, like the discovery of India. D in discovery, I in India. The Hindustan Times, फेमिना एट्सेट्रा. द नेम्स ऑफ रिलीजन्स, धर्मों के नाम के साथ रिलीजियस ट्राइबल ग्रुप्स के साथ, जैसे द सिख, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम. द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के नेम के साथ भी
like English, Hindi, Punjabi, Tamil, French, etc. The name of historical events, example like the Battle of Panipat, Independence Day, the Battle of Plassey, the Quit India movement, etc. The names of festivals like Diwali, Durga Puja, Eid, Christmas, etc. And we also use capital letters in abbreviations. Examples like MA, USA, SK Gupta, IS, BBC, and the name of political parties and government bodies. Example: Bharatiya Janata Party, the Indian National Party, Congress. We always use capital letters like the T in the Bharatiya, B in Bharatiya, and J in Janata, and P in Party. इन द रिपोर्टेड स्पीच पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच के पार्ट में कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं. द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन द कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल: द टीचर सैड द बॉयज. वाई हेयर W is capital. Why are you making a noise? For all nouns and pronouns referring to God, कोई सी भी नाउन या pronoun के साथ जो भगवान को रेफर करता है, like the Almighty, the Lord, His will. To begin personified objects such as oh death. तो personification का यूज़ करना हो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं. Save me, oh life, what are you? Now second is comma. Where we use comma? Comma is a mark to show a short pause or break between the part of a sentence. इसका हम यूज़ करते हैं to show a short pause, थोड़े से ठहराव के लिए, instead of full stop. We use a comma in the following way. First, we may use commas to separate words. जब भी words को अलग करना हो हमने phrases और clauses in a sentence like he came, comma, he saw, comma, he conquered. वह आया, उसने देखा और वह जीत गया. I went to the market and purchased books, comma, notebooks, comma, drawing material and some clothes. Second, we use a comma before a coordinating conjunction in a compound sentence like he is haughty, comma, still her friend love her. Second, though he is 70 years old, हालांकि वो 70 years old है, 70 साल का है, लेकिन yet फिर भी he looks 50, फिर भी 50 का लगता है. So we use comma with old. Third one is although he is poor, yet he is happy. And fourth, you must not be late, comma, or you will miss the train. We use a comma to separate a non-defining relative clause from the principal clause. जब भी हमने non-defining relative clause को अलग करना हो principal clause से, like I belong to Sohna, which is a small town in Haryana. My brother, comma, who is a doctor, comma, is going to America for higher studies. Next, we put a comma before or after the reported speech in direct quotations. Example: the teacher said, comma, the comma start, the earth is round. Second, you are liar, said my father, said my friend. Third, a comma used to separate the words of address in a sentence. Example: लेडीज एंड जेंटलमैन, कोमा, जब भी हमने क्या करना हो वर्ड्स को एड्रेस, जब किसी को एड्रेस करते हैं सेंटेंस के अंदर तो उसमें अलग करना हो वर्ड्स कर, तब का यूज़ करते हैं कोमा. जैसे लाइक लेडीज एंड जेंटलमैन, कोमा, आई वेलकम यू टू दिस मीटिंग. मे आई कम इन, कोमा, सर. राजेश, कोमा, व्हाट डू यू डू. नाउ कम टू द थर्ड पंक्चुएशन मार्क्स, दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप. वेयर वी यूज फुल स्टॉप? The full stop is used to mark the end of a statement and an imperative sentences. जब भी किसी कोई स्टेटमेंट जब ख़त्म हो जाती है, बाकी के पूरा होने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं. लाइक देयर आर मैनी गुड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया, फुल स्टॉप. बी पंचुअल. आफ्टर दैट ये imperative सेंटेंस है, फुल स्टॉप. वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, फुल स्टॉप. डोंट बीट अबाउट द बुश, यहाँ वहाँ की मत मारो, फालतू बातें करना, फुल स्टॉप. The full stop is also used after abbreviation, short forms and initials like Bachelor of Arts, means B और A के बीच में क्या है, full stops हैं. Government, GOVT, full stop. Ram Kumar Gupta, RK, full stop, Gupta. Okay. So dear students, today we have discussed 3 different punctuation marks. So we shall discuss the rest of the punctuation marks in next video. So till then, listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.